the market in the last settlement rallied from 17,080 to 17,915. So that's almost 835 points. And today, from 915, 17,915 is gone to 18,060 or 55, I don't know what. So market is in fine fettle. The problem is that people who had shorted have lost a lot of money. And option writers, they got killed. अभी कितना बढ़ेगा साफ हो गया. So at 17,000 you short, 18,000 you cut your shorts, and 18,300 you go long. The same. Okay, you want to talk? Please. Yeah, Tarun Bhatt. आप बोलिए तरुण भाई. तो सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है. गुड इवनिंग सर. सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे लॉरस लैब का कल रिजल्ट आया, वैसे जैसे यूएस मार्केट में जैसे कंपनी का बैड रिजल्ट आता है तो स्टॉक 10 to 15% या उससे भी ज्यादा गिर जाता है, लेकिन इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? फॉर एग्जांपल लॉरस लैब आज 5% ऊपर चले गया. नेविगेट आपको पता होना चाहिए किधर बेचने का. सी और इंडियन मार्केट इज मैनिपुलेटेड, टोटली मैनिपुलेटेड. तो वो बैड न्यूज पे खींच लेते हैं, गुड न्यूज पे बेच देते हैं. तो आपको संभलना है. ये मेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है. लॉरस लैब में आज 11% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है. Somebody has gone long. That's it. Thank you, sir. Okay. Okay, Monin Shah, tell me. बोलिए मोनिल भाई. मोनिल भाई. गुड इवनिंग सर. सर मेरा क्वेश्चन था with respect to the IT results. So what do you think going ahead? So for this particular quarter there was margin pressure all across the companies. So what do you think the whatever the intermediate rally which has come will be sold into? Monil, yes. I'll tell you something. While I started speaking, what was the rush of asking the question? Huh? No, sir. I actually joined late, so I did not knew what was happening before I joined. अरे अभी तो चालू हुआ यार. Sir, I just joined 2 minutes earlier. I'm damn pissed with you, yaar. Instead of listening to me, you ask questions. No, sir. I want to listen to you because your anecdotes are very important. Thank you so much. Okay. Disclosure, I don't play Nifty, Bank Nifty and their options. I am totally against it. Having said that, this Nifty is going to take lot of
people out of the market. On the upside, on the downside, on the upside, on the downside. It's going to be very choppy, very bad, and 2-3% trade line is up. Nifty is up 100 points. My point is, you buy what you have to buy. You sell what you have to sell. Don't look at the Nifty. It is misleading, and definitely the volume suggests that there are very few players who are interested in this product. निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया. Now, IT stocks. If they were listed in US, they would be down 20, 30, 40%. But over here, because all the mutual funds have invested a lot in this crap IT stocks, they are supporting it. Good luck to them. But one thing I know, after so many years in this market, this supporting and all that works only for few days or weeks. Thereafter, pani ka pani, दूध का दूध. So, I foresee minimum 20-30% fall in IT. Pharma, lot of stocks are showing signs of bullishness, but be wary of them. They have been value destroyers all this while. So don't get sucked into it. Now, one gentleman who asked about Taurus Lab. From where to where? He is worried कि 290 का 310 क्यों हो गया, पर वो नहीं सोचा कि 700 का 300 हो गया, उसका क्या. So, pharma, be wary. Banking, actually nothing is happening in banking. वो 2 रुपया ये बढ़ता है, 5 रुपया ये बढ़ता है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ जाता है. So, my point is, this space is all about trading and investing in good companies. Investing in good companies, all of them which I think are good, I have given on my timeline. And trading, you have to short. Always you have to short. It is in India that people use futures to go long, which is very, very wrong. I have explained it umpteen times. It's not tax efficient. But I realize nobody pays tax because almost everybody is in loss. The moment you touch the futures market, I can tell you with confidence, sheer super confidence, that you will lose money. This product is designed in such a way it's going to work against you, work against the bulls. You pay the contango charges, you pay brokerage, SCT, blah blah blah. Then there are people who people who manipulate. The ones if you have gone long and they realize somebody has gone long, the counter is manipulated.
You will get tired of holding the position, square off, then the market moves up. So net in futures you cannot make money. And options, Nifty Bank Nifty options, if you play, it is better to commit suicide than to play this. This is very, very bad. Don't. I'm requesting you, don't get into this influencers and all that who say they made this straddle ये blah blah blah. अरे भाई पैसा इतना आसान होता तो सब लोग ने बहुत बना लिया होता. It's not. It's not. Option is the fourth derivative. How can you survive? You don't have knowledge of ABC. You don't have any knowledge and you want to play options. Come on, yeah. All that money that you have, invest in good stocks. Stock market is basically for buying and selling of shares and nothing else. These are derivatives. Understand the word derivatives. Derivatives are created for the generation of income of the exchanges and SEBI and all that, and the government, not for you. Now, as far as I am concerned, I did suffer a loss, very minute. Uh, I will explain. Whatever I am short, three strikes away, four strikes away, I have a call option bought. So I am not worried. If it goes up, goes up. And at times it has happened so that the uh, call option, when it increases dramatically, I knock it off and keep the position unhedged. And within an hour or so, I make a lot of money. So, okay, whatever I do is very, very haphazard. I don't know charts. I don't know algos. I don't know this गामा बीटा थीटा कुछ मालूम नहीं मेरे को और समझना भी नहीं है मुझे. आंख से देख के समझ में आ जाता है कि ये एक्सपेंसिव है या सस्ता है. तो ये जैसा निफ्टी ऊपर जाएगा, आप अपने आपे में रहना. डोंट गेट सक्ड इनटू इट. use this opportunity to get the dirt out of your portfolio and increase your allocation to stocks which are going to perform. Now, stocks which will perform, maybe pharma, but I am dead against pharma. Pharma is no investment. World over, it doesn't perform. Secondly, this what do you say? Capital goods, very bullish. Third, crucibles and all that, and out of the what do you say, QSR, I have knocked off everything, and I added Westlife. Westlife, very bullish. Jubilant Foods, February month, they made a cash loss. I don't know they how they make their
final accounts, because all the accounts are made. Don't ever think these accounts are genuine. They are made up. Okay. So Jubilant is no. फिर वो देवयानी. Another one, Varun Beverage is very good. Then, और मैं एक बात बोलता हूँ. Suppose if I have 1 crore, कितने स्टॉक चाहिए मुझे? 4, 5, 10. वो अगर हो जाता है, फिर ढूंढने का जरूरत नहीं है. ये जो है ये रिम वो हो जाएगा 2000 रुपया. एबीबी, सीमेंस, कैना मेटल, क्यूमेंस, सब ले. सप्लाई नहीं है उसमें सीबीआई का रेट नहीं है, कुछ नहीं है. ये सब ले. एक दूसरा अच्छा लगता है ये डीएलएफ, ये एन्युइटी इनकम उसमें है ज्यादा. तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है यहाँ से तो डीएलएफ बहुत बढ़ेगा. मेरे हिसाब से मैं नहीं लेता हूँ, बट इतना समझता है मुझे. और क्या करो भाई लोग, कुछ भी करो, चोरी करो, लूटपाट करो, लेकिन एफएनओ मत खेलो. यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, उनको कुछ नहीं मालूम. खाली आके भाषण करने का, इसके ऊपर अच्छा, इसके नीचे खराब. एक सवाल पूछा तो पे हो जाता है. तो हाँ, अगर आपको खेलना है, पूरा नॉलेज होए वो कंपनी के बारे में, तो खेलो. और पूरा इन द सेंस 20%. आई एम नॉट सेइंग 100%. 20% नॉलेज है तो खेलो, वरना मत खेलो. आपको पता ही नहीं है क्या कंपनी है. एक बार क्या हुआ था, सब कंस्ट्रक्शन कंपनी और रियल्टी जोर में नीचे जा रहा था. तो मैं एक नाम देखा, कोर प्रोजेक्ट, शायद मैं बताया होगा. मैं बोला ये इतना ऊपर कैसे है? 280 का भाव था. ठोक दिया. इतना ठोका 40 रुपया था. तो वो प्रमोटर मिलने को आया, क्या है तुम क्यों बेचते हैं? मैंने बोला कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या है? कुछ नहीं. अरे बोला मेरा एजुकेशन कंपनी है. तो मैं बोला तुम नाम ही ऐसा रखा. सो द पॉइंट इज, including myself, we don't know what are we selling or buying. Actually, I was aware of it, but वो ठीक है, बोलने का बात है. और एक लास्ट बात बोलूंगा. Late 80s, I used to speculate in castor oil, castor seeds. So my mentor, Ghanshyam Das Biyani, and I used to go every day 4 o'clock. No, 3 o'clock to the market, somewhere in Kalbadevi or something. It's an area in Mumbai. पूरा टाइम सौदा चलता था. और बंद का टाइम आने का समझो 5 बजे. अभी याद नहीं है क्या बंद टाइम था. वो 10 मिनट पहले किधर से 20-30 लोग आ जाते थे और भाव में लाओ करके
चले जाते थे। तो वो झन्ना मन्ना का सट्टा था, उसमें एक लिस्टेड कंपनी है जयंत एग्रो करके, वो भी बहुत खेलता था उस टाइम, मैं भी खेलता था। वो घनश्याम जी तो बहुत बड़ा करते। तो ये स्टोरी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अपना निफ्टी ऐसा है बॉस, कुछ नहीं होता है पूरा दिन, लास्ट में आता है बढ़ा के चले जाता है। अपने लोग ए विसल मारा, ये ताली मारा, ये तो है निफ्टी का खेल। इट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। The ramifications and all will be very telling. Be cautious, buy good shares. And another thing, एक रेखचंद जी थे, रेखचंद बागड़ी. He was a big time speculator in castor, cotton, whatnot. He explained to me कि सट्टे में लोग घर बनाते हैं, घर घर। तो मैं बोला ये क्या होता है घर? तो बोलते हैं वो जितना भी शेयर्स है, समझो शेयर बाजार का बात, वो ले लेता है, जितना भी माल आता है वो लेता है और भाव टिका के रखता है, उसको बोलते हैं घर। तो यहाँ पे ये 90% शेयर्स है ना, ये ऐसे है, दे आर नॉट genuine shares, they are just there. Now to prove my point, you observe the chart of Indigo. Chart meaning you see the movement. It is as if the heart monitor has gone blank, straight line. तो वो घर है, समझ जाने का। और ये जो घर वाला शहर है ना, उधर जाने का नहीं, कभी भी मत जाओ। Don't ever go. You will lose money, sleep, irritation, everything will happen. से आपड़े हेवल्स है, मदरसन सुमी है, इंडिगो है, कितने सारे हैं, वो नहीं जाने का। लेकिन वो जब when to go, and that is a problem, a big problem. That time you should short. Otherwise, there is no use shorting. You are wasting your margin, time, energy, everything, and your family's money. This takes me to another company, Crompton. Believe me, it will seek much lower levels. I see the delivery volumes. It's almost like 70%, 80%. Something is wrong there. I have sold calls, too much of calls. But I think in a day or two, I will convert the calls into a futures position. That's that, dear. Thank you so much for listening to me. And again, I am saying, the moment you get rush of blood in your brains during trading hours, suggest get up from the machine, take a walk, take a smoke, take whatever you do, but don't do anything in rush. मेरे गए ऐसा मत करना भाई, आराम से सोच के सौदा करो, किधर भी नहीं जाने वाला है। मैं 45-46 साल हो गया
तभी भी सौदा करता था, आज भी करता हूँ। तो बाजार बूढ़ा नहीं हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और मेरे जाने के बाद भी बाजार चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। तो डोंट बी इन अ रश। सी, keep your mind very positive while trading. झगड़ा हो गया मत करो, हंसते रहो, म्यूजिक सुनो, इट्स नाउ और नेवर। माय फेवरेट सॉन्ग है, और रोज एक दो बार सुनता हूँ। चलिए, मेरा अभी खत्म हुआ। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। Seniorson, you're not accepting the mic. No request. No, sir, no request. तो बंद करे फिर। Yeah, Srini. Good evening, sir. Good evening. बोलिए बोलिए। The if I may just add a comment, sir, आपने अभी जो बोला, I was traveling. I was at a very long buffet, whatever the खाने वाला, and उसमें I think there were 30 items, सब कचड़ा. So हमने 15 मिनट लगाया to figure out which are those 2 items worth eating, and फिर वही डाल के खाया. In many ways, actually, sir, ये शेयर बाजार भी शायद वैसे ही है. We have to spend more time in figuring out what to ignore, and then just focus on one or two things. A lot of distraction otherwise. True. बोलिए, वो कोई start, please. Hello. Yeah. So, Mike, so I have been trading futures for 15 years. I trade commodities. I have been listening to your spaces very regularly. Whatever you say, a lot of knowledge you give, it is actually very helpful. Even after 15 years, I can take most out of what you say in your spaces. But what you are saying today is actually not, I would say, I would completely not agree to what you are saying, which is don't trade FNO. There's a lot of money in FNO. There's a lot of success that you can see in FNO. But the learning curve in futures and options is completely different. It will take you a lot of time to get into futures and options, to understand futures and options. Maybe 2 or 3 years to understand what you're doing. But once you understand that, once you get into the market, once you start doing it, the fruits are there, and fruits are very, like, you can see it, it is there. But the learning curve is very different. You may be able, it will take a lot of time for you to get in. The struggle will be real. It's not as simple as you see in movies, but you'll you'll be successful. So this is what I wanted to actually say about futures and options. Well, I can say one thing. If you have the aptitude, yes. And after 15 years, you are saying this. But nobody over here is more than, okay, there might be people, but this is for newbies or people who don't know anything. So, thanks for correcting me. Sorry, I was not correcting you. I was giving my opinion. No. But having said that, whatever I have, it is out of trading income only, and investments. Yeah.
So Even me, whatever I am, it is only because of my futures trading. yeah. Good. So thank you so much. Yeah. Hello. Yeah. Bolo. Hello, everybody. See, I've been asking so many people on Twitter about this 3 o'clock spike today, but nobody seems to have a proper answer. Okay, I'll tell you. Okay. Monthly, month-end rates, and secondly, there was a rebalancing. Okay, Okay. these are the two main reasons. So most of the people must have been aware that this was going to happen at 3 o'clock today. Were you aware? No, I am not aware. That is why I've been asking everybody. So I told you, no, these are the reasons. No, so these reasons, most of the people who are experienced in trading, they must have known in advance. But And they must have known in advance, yes, but nobody has money left to trade, yeah. Everybody has lost money. And also one more thing you keep in mind, there is no use doing post-mortem. Okay. Then what about the chartist? They see everything, every down move or up move. Were they able to see this extraordinary 3 o'clock move today? I don't know. I'm not a chartist. Okay. Thank you so much for the opportunity. Yeah. Yeah. Sharad sir, this is Abhishek. Yeah. So thank you. We get to learn a lot of things from you. I had one question only, that if you could tell us, I mean, in all these years of your experience in the markets, for us newbies, what are the things that we should avoid? Because I am not a trader. I don't trade daily. I'm a positional trader. So I take positions and then I sell them, once I get into profits. So if, any pointers you would like to tell us would be really, really helpful, sir. No, you play futures. Hello. Yes, sir. You play futures. No. I'm into equity, sir. No future and options. I don't understand. Good. You will be very successful. Thank you so much, sir. Sir, only thing I wanted to learn from you is anything you would like us to avoid. I mean, any mistakes you have done in your career that you don't want us to do. Anything of that sort, if you could tell us, would be great. That's what I wanted to ask you, sir. No, forget about my mistakes. But what you should do is concentrate only on one thing: quality, quality, quality. That's it. वो सब फालतू कंपनी आप लेने का नहीं. MNC लो या ब्लू ब्लडेड स्टॉक लो, वेस्ट लाइफ लो, ऐसा सब लो, अच्छा रहेगा. Understood, sir. Thank you so much, Sharad, sir. Yeah. You stay healthy. Thank you. Yeah. चलिए भाई. Hello. Good evening, sir. Yeah. Sir, Good evening. my question is related to risk associated with pledging of stocks to a broker. There is no risk. So, follow up on that. When they provide any margin, do they charge any interest on that? Or, It depends on broker to broker. Yeah. okay. Thank you so much. Okay. बोलिए. बोलिए भाई, कोई तो बोलो. स्टॉक. सूरज आप बोलिए. Hello, am I audible? Yeah. Hello, good evening, sir. Big fan of you.
मुझे आपसे थोड़ा जानना था कि टेप रीडिंग पर थोड़ी आपकी विजडम क्या होगी सर? हाँ टेप रीडिंग पर हाँ मैं प्रोप्राइटरी डेस्क में आर्बिट्रेज करता हूँ, सो डायरेक्शनल भी ट्रेडर हूँ, मतलब हर तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ, बट मेजरली मेरा फोटे आर्बिट्रेज। तो टेप रीडिंग पर क्या विजडम होगा आपका? विजडम तो क्या है, देखते रहो और क्या, जो समझ में आए समझना। एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया है, आप बताना गलत हो तो। बायर और सेलर दोनों साइड पर बिडास्क रहते हैं। जब भी स्टॉक को गिराना रहता है ना, तो वो बाई साइड एग्रेसिव बिडिंग करता है, मतलब जो कोई भी हो। और जैसे ही बाई साइड एग्रेसिव बिडिंग आती है ना, स्टॉक गिरता है, प्रोबेबली बढ़ने की जगह है। तो इज दैट मीन एनी सेंस? मतलब वो सही जा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा नहीं, suggest करो। बराबर है। सही है सर? हाँ सही है, बट another thing, tape reading is not watching F6. ओके। Tape reading is that you see the ticker that comes on TV, iPad and all that. जनरली उसको ओडिन वो सब यूज करते हैं, तो उसमें क्या ऑब्जर्व करूंगे ज्यादा? नहीं नहीं, आई डोंट। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, उमेश हियर। सर अभी आपने ये जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का बताया था, कुछ इसमें वीकनेस है, तो इसमें मैंने ऑब्जर्व किया सर कि लास्ट 3 इयर्स में ये प्रमोटर्स का स्टेक 26% से 0% दिखा रहा है अभी, और सेम हैज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द एफआईज एंड डीआईज। तो आप इसमें कुछ सीरियस कंसर्न देखते हैं? क्या रीजन है मतलब? नहीं यार, मतलब इतना मालूम है कि ऊपर में कितना था, अगर आपके पास चार्ट है तो देखो ना। सर मैं चार्ट तो नहीं, बट अराउंड 400 प्लस है 52 वीक में अराउंड। हाँ तो दोस्त यार, 400 वाला 250 है तो कुछ तो गड़बड़ होगा ना। हाँ नहीं, नॉर्मली जैसे मैं जब भी फंडामेंटल देखता हूँ तो प्रमोटर स्टेक जरूर देखता हूँ, यहाँ ऑलमोस्ट 0% ही दिखा रहा है ये, और ये लास्ट 2 क्वार्टर्स में हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज है, क्योंकि प्रमोटर से ज्यादा तो कौन जानता होगा किसी कंपनी को, तो इसीलिए थोड़ा पूछा था उससे। अरे ले लो, पुट वुट मार लो, सौदा क्या है। ठीक है सर, राइट, थैंक यू। बोलिए। Sir, this is Ram here. Nice speaking to you. So my question is about Tata Motors in comparison to Tesla. It seems like Tiago EV is a successful one, and if they apply the same technology to other cars in Tata Motors, can we see a big up move in Tata Motors in the future over 3 years or up to 5 years? Thank you. See, two questions like Tesla. Now Tesla is another beast, and Tata Motor is an insect. Okay, as a comparison. But Tata Motor on its own, I think 3-5 years it would be headed towards 300. All automobile stocks in India, because if you compare the PE of all the automobile uh, companies from Japan to America, 5, 6, 7, 8, 9, 10 max P, अपने वहाँ कितना P? 50, 60, 70, 80, which is not going to last. So I'll be very wary of investing in Tata Motors for a long term. You can do a punt. It's going up. That's my take, Ram. Thank you, sir. Thank you. Yeah.
स्टॉक मार्केट का मारा। बोल भाई, कितना मारा बोल। स्टॉक मार्केट का मारा बोलो ना, नहीं बोलने के। अब परेश भाई आप बोलो। प्लीज। ओके नाउ आनंद भाई बोलिए। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? बस मजे में भाई। जी वे करते करते आ गए पर 18,100 तक। और 200 एनीवे मेरा व्यू थोड़ा चेंज हो गया आज। मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा मार्केट नेगेटिव जाएगा। हाँ, बिकॉज पैटर्न एक 9200 के तक का जो रास्ता है उसमें पहला लेग कंप्लीट कर लिया। अभी मेरे को लगता है एक डाउन साइड लेग आएगा छोटा सा, 400-500 पॉइंट की बंदी आएगी। फिर उस 17,500 17,600 वापस एक बार टेस्ट करेगा। वो बॉटम टेस्ट करने के बाद ही 19,200 तक जाएगा। यहाँ से ऊपर अगर गया तो वो पैटर्न कंप्लीट नहीं कर सकता। इसीलिए मेरा आज थोड़ा बाय एंड ऑफ द डे जब मेरा बाउंस कर रहा था तभी थोड़ा मूड चेंज हो गया। आई वुड हैव बीन हैप्पी आज अगर 40-20-30 पॉइंट ही करके बैठता, बट इट इज नॉट डन दैट। एंड फिर थोड़ा सा जो ट्विटर पे जो एक्शन दिख रहा है, पीपल हैव स्टार्टेड बिकमिंग एक्सट्रीमली बुलिश। जैसे मैं पहले बोला था, ये एक बार 18,000 क्रॉस कर दे तो सब आ जाएंगे तेजी में। आ गए वापस आज तेजी में। सो एक बार के लिए तो वीक हैंड्स जो फिर बैठे हैं आज। बहुत सारे व्यूज थे। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है सबको। कुछ लोगों को एवरेजेस क्रॉस किया, ये किया वो किया, देखिए ऐसा कर रहा है, टेस्ट करके ऊपर आया। बहुत सारा व्यूज है, बट आई डोंट थिंक ऑल ऑफ देम विल प्ले आउट। दिस इज द टाइम फेज ऑफ द मार्केट जो मैं बोलता हूँ हर बार कि इस बार मार्केट विल प्रूव ऑल दोस स्टडीज रॉन्ग। तो माय assumption is in spite of people becoming so bullish, एक बार के लिए नीचे आएगा 17,500। To add to this, if you look at the VIX is like almost at an all-time low. It cannot sustain these levels for long. So for VIX to come back a little bit up so that the market finds some sense. Otherwise, if the market keeps going up unidirectional, then it cannot really do much. So I think taking all of this into consideration, एक बार के लिए 17,500 आएगा, फिर एक बार शेक आउट करेगा सबको, शेक आउट करके उसके बाद में जाएगा। एंड सेकेंड टाइम इट क्रॉसेस अनदर टाइम, मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग इट ऑल दिस टू हैपन इन द नेक्स्ट 15 days बाय 15 to 16 जून में। अगर सेकेंड टाइम और एक बार 18,100 क्रॉस करेगा, तभी उस टाइम क्रॉस करेगा तो पब्लिक एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएंगे और फंसेंगे। दे विल ट्राई टू प्ले द लास्ट, they will think it is going to be a new bull market, but it is not going to be। 19,200 19,300 के आसपास जाके इसको रेजिस्टेंस खाना है। दैट इज व्हाट द पैटर्न इज सेइंग अभी तक। मैं तो पैटर्न ही देखता हूँ, तो पैटर्न अभी बोल रहा है वीकनेस फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 trading sessions. That's my view on the Nifty. Coming to stocks, there are a lot of stocks which are showing weakness. And I have personally gone short on a few today, expecting them to go down. But बहुत नैरो लिस्ट है स्टॉक के, 7-8 ही है जो ऊपर जाने का स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। So based on just these 5, 6, 8 stocks, maybe another 1, 7, 8 will join in. 15-20 स्टॉक मिलके ऊपर खींचेंगे निफ्टी को टू 19,200। बट देन अभी for the normal public, it is not the time to short the market. It is for them to stay away from the market
एक हफ्ता शांति से बैठो, कुछ मत करो। ट्यूसडे जरूरी नहीं है ट्रेड करना, ट्यूसडे दिखा देगा मार्केट क्या करने वाला है, ट्यूसडे नहीं तो वेडनेसडे दिखा देगा। But wait for these 2 days, Tuesday and Wednesday. Don't get aggressive on longs because this is where you will have the best trap laid for the bulls. For the bulls. अभी तक जो बेयर थे वो सब बुलिश हो गए, अभी पोजीशन भी कट गया और इन दी सेटलमेंट मार्केट बहुत लाइट है। लाइट है का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर भाग जाएगा, लाइट है मतलब मार्केट कैन स्विंग इन एनी डायरेक्शन। सो राइट नाउ market should pick up speed to the pick up weight to the downside। थोड़ा मार्केट नीचे आएगा तो फिर पब्लिक सब बेचना चालू करेंगे, उसके बाद में 7500 से जो तेजी पकड़ेगा दैट विल बी द मोस्ट ब्रेथटेकिंग पार्ट ऑफ दिस रैली। अभी तक जो देखा यह स्टेप 1 था और स्टेप 2 नीचे आएगा, स्टेप 3 में जो है जो भयंकर स्पीड पकड़ेगा वो 1000 पॉइंट कितना जल्दी निकाल दिया पता ही नहीं चलेगा। इट विल इवन डू इट विद गैप्स, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट। मोटा मोटी ये व्यू है फॉर द नेक्स्ट 15 days। Anything else somebody wants to ask or I'm open? Yeah, hello, Mr. Ananta Acharya. Who's this? Identify yourself, please. My Twitter handle is Trade Angel. Pardon? Okay. Actually, you spoke very fast and you spoke a lot. So will it be possible for you to make a thread on whatever you spoke just now, so that people here, they can take a look at your thread at a leisure and try to understand whatever you have said? I keep tweeting about it. I keep tweeting my view continuously on almost all through the day, every day. If you follow me, you will get all that. Making a thread of this, who has the patience, boss? Yeah, okay, I understand that, but you spoke so fast and such a vast amount of words. No, That at least a newcomer like me. You hear the recording and you will be able to understand. Yeah, that's a good point, Mr. Sharasha. Anand. But I've got a question for Mr. Sharasha now, if you permit me. See, since the last RBI announcement of keeping the repo and reverse repo rate unchanged, the bank Nifty has been going up almost every day without a break. Nifty was struggling to begin with because of Infosys and Reliance and everything. And it struggled to keep pace with Bank Nifty. And now everybody, including Mr. Ananta Acharya, is expecting a correction from Tuesday onwards. So what are your views? Are we going to see a correction starting Tuesday onwards? And if yes, will it be more in Nifty or more in Bank Nifty? Please enlighten. I would keenly watch the results of ABB on Tuesday and Cummins and Siemens. Okay. Because this Nifty and all is a time pass. It's useless. So it is good for people who have nothing to do. If you are a stock picker, you need not look at Nifty. Okay. And what अभी निफ्टी ऊपर गया नीचे गया कुछ भी हुआ, लेकिन आपका स्टॉक है वो ऊपर है कि नीचे है, क्या फर्क पड़ता है आपको? नहीं, ये बात तो सही है. See, Nifty has got लॉट से निफ्टी खेलते हैं, बोलो ना. नहीं, I'm a very small trader, hardly 3 or 4 lots at one time, or about 30 or 40 in a day. तो काय को मगजमारी करता है यार, छोड़ना.
There are better things in life that you can do in the stock market and make a lot of money instead of wasting your time. For instance, Big, good stocks, buy them. okay, so you are talking about long-term investing. Short term also, day to day, intra week, intra month. There are many things. See, look, you do whatever you want. I am nobody to stop you. But I would say, how old are you? I am 30. Okay. So, by the age of 35, you will be impotent. Okay. Okay. ये निफ्टी खेलेगा तो छोड़ो यार ये फालतू का बात है वेस्ट ऑफ टाइम Okay. अरे यूटिलाइज क्या शरत भाई, आप हमारे कस्टमर को बिगाड़ रहे हो। वो नहीं खेलेंगे, वो लॉस नहीं करेंगे तो हम जैसे लोग प्रॉफिट कहाँ से बनाएंगे यार। अरे बट आप एक बात समझो ना, ये टाइम जो कैरी फॉरवर्ड हुआ 82 लैक्स, लोएस्ट इन 5-6 years. करेक्ट, यस। अभी निफ्टी का वॉल्यूम आज था 63 लैक्स। हाँ, तो धीरे धीरे ये वॉल्यूम है ना 30 लाख हो जाएगा, लिख के रख। हाँ, No, because you are not taking my point कि किसी के पास में पैसा ही नहीं है। करेक्ट है। इधर मैं आके बोलता हूँ मैं 10 लॉट मारता हूँ, 20 लॉट मारता हूँ, 100 लॉट, और वास्तव में देखेगा ना एक लॉट भी नहीं मारता हूँ, वो किताब में लिखता हूँ मैं। हाँ, सही है। Another point I want to ask you is, आप बोला सब 5 से 7 स्टॉक बेचा आज, एक दो का नाम तो बताओ भाई। मैंने एशियन पेंट बेचा, एक सेकेंड, रॉन्ग। मैंने एशियन पेंट बेचा। अच्छा ठीक है सर, जब भी मैं कुछ करता हूँ सबको रॉन्ग ही लगता है, अब क्या करे। अब मैं तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया कि सबको रॉन्ग क्यों लगता है। आई सोल्ड एशियन पेंट, आई सोल्ड इंडियन होटल। हाँ, 2 examples. Don't ask me for the rest. Okay, thank you. These are my personal trades. Yeah. हाँ. Hello. No, your personal trades, if they turn profitable, हाँ. I am a 50% partner. हाँ जी। अरे 50% का 100% ले लो आप, मैंने कहाँ मना किया। ये भी ख्याल अच्छा है। Mr. Anantacharya. Yeah. This is Trade General here. If you are planning to make money off me, then I am not your customer. I am going to be one of your victims. I don't know all of that. In the market, everyone is anonymous. I don't know who I'm taking money from, which is why I like the markets. But understand one thing. This market will only reward if you have a skill which other people do not have. The mistake which most people do is they come in the market, they think that by looking at something free, hearing some space, hearing those things, kuch malum pad jayega, and the market will reward their action. It will reward, and luck will only take you for a while. Maybe in the stock market, luck lasts a little longer. But if you take a longer period of time, it always even out. The person with the better skill always wins. So I keep telling people, understand the language of the charts and then play. And there is no victim here. There is no winner here. Ultimately, most of us are paying 30% of our gains in terms of taxes, or 30%. काय का टैक्स इनकम ही नहीं है तो काय को। अरे थोड़ा बहुत तो है भाई साहब, इतना भी बुरा नहीं है अपना हाल। इतना बुरा नहीं है। नहीं, ओवरऑल आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट। हाँ, ये फ्यूचर्स मार्केट में तुम पैसा नहीं बना सकता है, 0/0। हाँ करेक्ट है, पब्लिक नहीं बना सकता है। वही तो मार्केट आपको पैसा क्यों दे। मैं पहले सवाल यही पूछता हूँ सबको, मार्केट आपको पैसा क्यों दे। आपके पास ऐसा क्या स्पेशल है कि मार्केट आपको रिवॉर्ड करे।
है नहीं, पब्लिक नहीं बना सकता है, मैं भी मानता हूँ, इवन कैश में नहीं बना सकता है। Mr. Acharya, you were just speaking about skills, and then you mentioned charts. So, reading charts is the skill you recommend to be able to make money in the stock market, whether F&O or cash market? You have no other alternative. No alternative to charts. No, you have practically no other alternative. Tell me one fundamental analyst who can tell you why the interest rate was not raised last time, why it was raised, or what will happen the next time. So did you see this? Come on, let's face the fact. The fact is the fundamental analyst is only taking the past and projecting it into the future. Sachin Tendulkar ne 200 test match khele. 100 test match खेले, let's say 100 odd. He played 200 innings. 200 innings में Sachin Tendulkar also scored only 40 centuries. 200 innings में, okay, he went out to bat 200 times. What is his scoring rate of a century? 20%. About 20% was his scoring rate, but yet every time he went out to bat, what did people say? इस बार century बनाएगा. क्यों बनाएगा? Last time बनाया था. हर बार बनता है? नहीं बनता है. So you have to understand one thing. What a fundamental analyst does is he takes a general trend of the last 3, 4, 5 quarters, sees if it has been going up. Next quarter also, it will say it is likely to go up. अगर आप एक्चुअल फैक्ट एंड एक्चुअल फोरकास्ट का चार्ट भी बनाओगे तो आपको पता चलता है द फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मार्केट. मार्केट पहले घूमता है, मार्केट पहले एक्शन करता है, उसके बाद में फंडामेंटल एनालिस्ट को दिखता है. नहीं तो ये फंडामेंटल एनालिस्ट को जो है, हेलो ट्रेडर, बस इनफ. Now we go to Ananda Sarkar. बोलिए. Good evening. Actually, asked almost 2 months back to you in this space about happiest mind and generally in the IT sector. Now the IT sector has seen a sort of downtrend. So, what is your opinion in general of IT sector? Can we enter in these prices, or it is still over valued? No, earlier in my speech I said that they should be down by 30 to 40% with this kind of results. Okay. See, it will not fall because all the mutual funds are buying. But it doesn't mean that I will buy. No, I will not buy. And when there are so many opportunities, why would you go into IT? Or you want dividend income? Okay, dividend income I'm getting from other sectors like NMDC and all. I have for long time they are giving good dividend income. I think IT stocks that don't give dividend income as the prices are very high and the dividend they give is just pennies. Okay. So my answer is I wouldn't touch IT. It might go up also, but I won't touch it. Good evening. Yeah, good evening. Sharad bhai, sorry, I couldn't turn the mic on. You mentioned crucibles. Noted. Done. Anything else? No, nothing really. Okay. Let the results season get over by 20th and we'll see what comes up. Okay, sir. Oh, thank you. Yeah, sure. ईशा जी बोलिए. Vips. Yeah, hello. I'm not so much into the Nifty and all. I'm in my, which stock I told you. वो तो अभी 65 हो गया है. So I'm playing in that only big quantity.
in 2-3 of these. Abhi now this is the first time the rally is taking the mid caps also up big time. You know, good volume, good everything. Accumulation हो गया है सबका. So there's more money in that percentage wise. Almost every day you can make 2%, 5%, 2%, 5% रोज बन रहा है. तो निफ्टी में क्या पड़ा है? कुछ भी नहीं है. मेरा जो निफ्टी के स्टॉक्स पड़े हैं, टाटा पावर, ये वो, कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पे. एक बजाज फाइनेंस चल गया 300 रुपया, है कि नहीं? ABB moved up 300-400 rupees. There's something in the power sector, I don't know what, but Tata Power, तो it has to still go at least till 220. Just independent of the Nifty, I'm just talking on the normal technicals कि इतना गिर गया तो थोड़ा pullback तो होगा. That's it. But I am concentrating only on all these small ones. आपको मालूम है मैं तो delivery boy हूँ भाई. I'm तो enjoying myself. 4-5 rounds I've done already. Yeah, and now I've taken a very big position. अभी देखते हैं, अभी तो breakout है, कहाँ जाएगा देख लो. And there are other 2-3 other stocks, very good. You know, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, लेकिन now today I was fully invested. I have no money now. तो अभी index ऊपर जाए या ना जाए, I have to look at my stocks individuals. So I have knocked off the index thing only on my screen when I watch market watch. My index का वो मैंने डाला ही नहीं. Index क्या हो रहा है मुझे पता नहीं. It influences the mind. Just a moment. What people said, you should have also apply in your life. Yeah. No Nifty, Bank Nifty option. Actually, our products are for and the famous. अरे बहुत आवाज आता है. विपुल भाई आपका म्यूट मारो. Mute. Oh, I'm sorry. I've not got, only a fan is on. So the point is, if you have crores of rupees to squander away, and you can afford it, then you play Nifty, Bank Nifty and options. Don't play with 2 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs, 50 lakhs. बहुत तो 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा. मत खेलो, मत खेलो, मत खेलो. नवराज बोलिए. नवराज. रमेश भाई आप बोलिए. सर नमस्कार सर. नमस्कार सर. एक थोड़ा सा एक डाउट है कि समझ लो कोई अपने पास में स्टॉक है और अभी बढ़ रहा है और अच्छा खासा उसमें मतलब इनकम हुआ है, तो अगर वो अननेसेसरी बेचना चाहिए या कुछ उस अगर रिजल्ट भी अच्छे हैं तो क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर रखना चाहिए सर? यार तुम नाम नहीं बोलेगा तो हम ऐसा क्या एडवाइस देगा तुमको. अच्छा सर जैसे RVNL सर, रेलवे वाला स्टॉक है सर. तुम निकलो यार. ओके सर, समझ गए सर. नहीं निकलो इन द सेंस यहाँ से निकलो. वो उसका बंडल बनाओ. अच्छा. और ऊपर डाल देना. वो क्या बोलते हैं, लॉफ्ट होता है ना, उसमें डाल बेचना कभी. ओके सर. ओके सर. ओके सर. सर एक दूसरा सर, आप ये सर स्पेल क्या है सर? केना मेटल, आप केना मेटल बोल रहे हो सर, उसका स्पेल क्या करते हैं उसमें? KENNAMETL. फिर से बताना सर. KENNAMETL. केना मेटल. ओके सर. ओके सर. ओके सर. थैंक यू सर. ये सब जो शेयर है ना, मैं बोलते रहता हूँ ना. हाँ सर. अगर किसी के पास में गलती से रह जाएगा, ओके, वो अरबोपति बनेगा. अच्छा सर. ऐसा नहीं कि तू 100 शेयर लेके फिर मेरे को बोले कि मेरा पति नहीं बना. ऐसा हाँ. यस. अच्छा शेयर लो. सच्ची में बोलता हूँ,
इंडिया में इतना नॉलेज है लोगों के पास में, अच्छा इतना बढ़िया कंट्री है, लेकिन सब ऐसा फालतू चीजों में अपने बिगड़ गए। ओके सर। लेकिन वर्ल्ड ओवर जहाँ पे भी सब एमडी और सीईओ सब है, इंडियंस ही है बहुत सारे। यस सर। तो इंडिया में कुछ नहीं कर सकते क्या? बिकॉज अपने एटमॉस्फेयर नहीं देते उनको। यस यस यस। लेकिन दोबारा बोलता हूँ, अच्छी कंपनियां लो, ओके सर। बाकी सब शॉर्ट करो, सो जाओ। ओके सर। गुड। थैंक यू सर। ईशा, you speak. Hi, good evening. Good evening. So, actually, I was listening to everybody, and right now I am thinking about Nifty mid gap. So it has given the confirmation. So I think that for next few months, mid gap stocks are going to perform. एंड वन थिंग आई से, अगर हम वॉरेन बफे का भी पोर्टफोलियो उठाकर चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उनके भी, लेट्स से अगर उनके 100 स्टॉक्स हैं तो सिर्फ 10 स्टॉक्स में ही मल्टी बैगर बना है। बाकी के स्टॉक्स तो उन्होंने भी मल्टी बैगर की तरह ट्रीट नहीं करा है, वो भी बहुत बार फेल हुए हैं। मतलब अभी जो शारद सर बोल रहे थे वो बहुत सही बोल रहे थे। सो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट दिस टाइम that again Nifty has come to 18,000, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी निफ्टी 18,100 और 300 का एक रेजिस्टेंस है। अगर 18,300 का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो 18,800 है। बट मेरे को एक चीज और लगती है, मंथली टाइम फ्रेम पर निफ्टी एक बार बियरिश रैली अच्छी देगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तब आई थिंक ऑप्शंस प्रीमियम काफी बढ़ेंगे, तब सेलिंग के लिए लॉन्ग रन के लिए हम बैठ सकते हैं। हो गया। आप कौन है ईशा बेन? आई एम ए ट्रेडर। ओके। बेस्ड आउट ऑफ? सॉरी? बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। दिल्ली। ये मिड कैप इंडेक्स आप खेल नहीं सकते हो ना? नहीं, मैं उसके स्टॉक्स के लिए बोल रही हूँ। अच्छा। बट मेरा मानना है कि मिड कैप में जो टॉप 30 स्टॉक्स है बढ़ेंगे, बट सब कचरा पट्टी है। कचरा पट्टी तो अभी मैं इतना बोल सकती हूँ कि अगर आप निफ्टी मिड गैप में डेली टाइम फ्रेम पर जो भी मैं इंडेक्स और इंडिकेटर्स यूज करती हूँ तो वो एक कॉन्फर्मेशन आया है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नॉर्मल कॉन्फर्मेशन है। बट अगर आप उसके बाद भी अगर आप सिंपल हायर हाई पैटर्न भी देखेंगे, उसका ब्रेकआउट आया है और पिवट इसका काफी दूर है, और आज मोरोबुजू कैंडल से टूटा है। सो आई नो अभी 700 पॉइंट्स का रैली ये बहुत जल्दी देगा, इवन मेरे को लगता है 10-15 दिन के अंदर ही दे देगा। तो जितने मिड गैप स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए थिंक हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब ये वाला टाइम है। जैसे जब निफ्टी 17,350 पर था तब 17,800 का कंफर्मेशन बहुत राइट आ रहा था। उसके बाद अब बैरियर्स हैं, 18,300 का भी है, 100 का भी है। बट अभी इस टाइम पर मिड गैप में आई गेस अच्छी रैली बनेगी। मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, आई एम नॉट मेकिंग दैट पॉइंट or I'm questioning the point you are making. I'm saying a lot of stocks that are rising are duds. So be wary of them. You will be surprised if I say Dixon is not worth more than 50 rupees. So I'm just trying to caution you that buy what is the best. That's my limited point. Okay. Okay. अभी कौन है भाई? Sharath bhai, this Isha I've been following for more than 1 year, and she had said it'll come to 16,800, और फिर वहां से वो जो जाएगा तो 19,750 जाएगा. So she's following it in her own way. I don't know how she gets all this, but so far it's working. No. So her this thing, because 18,250 वो 300 जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, because the January high was 18,252.
उसके ऊपर जब निकलेगा तो बाजार सोच सकते कि जाएगा 18,800, which was near the previous high of 18,600. वहाँ पे I'm not, yeah. Vipul. Hmm. Actually, I did not understand what she is talking about. Yeah, she's talking about the mid caps. No, because I don't understand charts. But one thing I realize, the way she is talking, she knows her subject. Yeah, of course. That's why I have to follow. Thank you. And she's not looking for customers. चंद्रेश भाई बोलिए. हाँ सर गुड इवनिंग. मुझे मतलब ये ट्रेडिंग का ये डेरिवेटिव्स का बात निकला तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस मेरा शेयर करना है. कई बार शरद सर क्या होता है कि हमारा मतलब एक दो बार सच पड़ जाए ना तो फिर अपने को ऐसा लगता है नहीं हर बार ऐसा ही होगा. ठीक है कि कभी कभी आदमी ट्रैप होता है, ये होता है, वो होता है, हर टाइम राइट नहीं होता. पर वो इंडिविजुअल रिस्क मैनेजमेंट है हर किसी का. पर स्टॉक्स ये शरद सर जो बता रहे हैं वो मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छा सोने जैसा है. उनका टाइमलाइन पे मैं भी देख के कुछ मैं इन्वेस्ट करता हूँ. सो बस इतना ही. ओके, थैंक यू. हाय शरद सर. हाय. अनुज दिस साइड. सर मुझे ये पूछना था, मेरे पास ना कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स पड़े हैं तो मैं सोच रहा हूँ उनको सेल करके स्मॉल कैप्स में आ जाऊँ सेक्टर लीडर्स में. तो ये स्ट्रेटजी ठीक रहेगी? ये स्ट्रेटेजी आप स्पेस पे पूछते हो वही गलत है. ओके सर. और एक दूसरा बात बोलता हूँ, बिना फीस का एडवाइस है ना, मतलब ही नहीं है. सर वो स्टॉक्स नहीं पूछ रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ स्मॉल कैप्स में शिफ्ट करना लार्ज कैप से. बट व्हाट सर विच जैसे स्टॉक? आईटीसी है मेरे पास ये सब, और इसके बदले में सेक्टर लीडर्स में स्मॉल कैप्स में लाइक बजाज फाइनेंस और जुबिलेंट फूड टाइप ऐसे स्टॉक्स में. रहने ना भाई, आईटीसी तेरे पास है, वो छोड़ना है. ओके सर. वो काफी चल चुका है ना इसलिए. ऑटो बेच देगा क्या? नो सर. पागलों जैसी बात क्या करते हो? बैठे रहो ना, आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, खुश हो जाओ. 50 शेयर बेचो और पार्टी करो, मजा करो. ओके सर. और सर जो बाकी ये सब लोग कहते हैं कि सेल इन मे एंड गो अवे, तो ये कितना मतलब सच है कि ऐसी है? एकदम सच है, लेकिन मई महीना हर साल आता है. ओके. यस सर. वो छोड़ो, फालतू यूजलेस है सब. इट इज फॉर ट्रेडर्स यार, नॉट फॉर यू. सर मैं ट्रेड भी करता हूँ वो निफ्टी बैंक निफ्टी में. पर चल फिर बात मत कर, चल. हर टाइम हो गया तेरा. निफ्टी बैंक निफ्टी वालों से मुझे सख्त नफरत है. यू कांट प्ले निफ्टी बैंक निफ्टी. हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन. अब मेरा एक क्वेश्चन है, सर्वेंद्र जी भी अगर जवाब देना चाहें कोई भी आप में से. जैसे कोई स्टॉक है, मान लीजिए मैं नाम लेता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर एग्जांपल. तो उसका ट्रेडिंग रेंज बिटवीन बिड एंड आस्क, जो खरीदार और जो बेचने वाले हैं उनका मोस्टली जो रेंज है वो मान लीजिए 80,000 से 90,000 के बीच है. उसी में वो गोल गोल घूम रहा है. अब मैं सवाल पे आता हूँ कि ये कितनी पॉसिबिलिटी है कि कोई बड़ा ट्रेडर उसको, जैसे जो भी मैनिपुलेट करते हैं एनी ऑपरेटर व्हाटएवर, कितनी पॉसिबिलिटी है कि एक बड़े ट्रेडर को अपना पेट भरने के लिए मान लीजिए उसको 80,000 के कॉन्ट्रैक्ट का जो हेर फेर चल रहा है उसमें से उसको 50,000 चाहिए, तो वो उस स्टॉक को कितना मैनिपुलेट करे, और क्या कोई तरीका है इसको मॉनिटर किया जा सके या इसको रीड किया जा सके? सर्वेंद्र, आपने सवाल सुना हो तो? हाँ भाई, सवाल क्या था तुम्हारा? मैं फिर से पूछता हूँ.
नहीं एकदम शॉर्ट में सर पूछ रहे शॉर्ट में समझ में नहीं आएगा, तो मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। आप अगर शॉर्ट में पूछना चाहते हैं कि बिड एंड आस्क का एक रेंज है, उस रेंज में एक ऑपरेटर सारा माल उठाना चाहता है, ठीक है, तो वो कितनी बार उस स्टॉक को हेर फेर कर सकता है और उसको मॉनिटर करने का क्या आसान तरीका है। एग्जाम्पल देके पूछता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज गिरना नहीं चाहिए था एज पर दी डिफाइंड मोमेंटम जो था मैथमेटिक्स के हिसाब से, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, बट उसको पटका गया क्योंकि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो एक या दो या जो ग्रुप ऑफ पीपल है उसके पास नहीं थे। मैं उसको मॉनिटर नहीं कर पाया एंड आई एम लुकिंग फॉर अ टेक्निक टू मॉनिटर इट। इतना सिंपल होता तो हर आदमी वही करता। सर ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो सकती, मेरा सिर्फ सवाल है, कुछ जानता है तो जवाब दे दीजिए। हो सकता है कि ना नहीं मालूम है नहीं मालूम है भाई, किधर ऑपरेटर हम लोग सब सिंपल सादे इन्वेस्टर ट्रेडर है, इतना बड़ा बड़ा ऑपरेटर का हम कैसा समझेंगे। नहीं सर, अपने को मैथमेटिक्स से मतलब है ना, ऑपरेटर मैथ से ऊपर थोड़ी हो सकता है। 2 × 2 = 4, वो 5 तो कोई भी नहीं कर सकता उसको। नहीं भाई, इसका मैं आपको समझाता हूँ। अगर समझो 50 लोग बेच रहे हैं तो 50 लोग ले रहे हैं, ठीक है। अगर 50 बेच रहे हैं तो एक नहीं हो सकता ना मार्केट में, एक ही कमाएगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता किसी के पास। चलिए दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड अस, इट्स वेरी हाई फंडा एंड एक्सेप्ट के वी डोंट नो, हमें नहीं पता। चलिए who's next? Sen R बोलिए ना भाई, कोई तो बोलो। सर मैं बोलूं? हाँ बोलना भाई। नमस्कार सर, मैं एक व्यू रखना चाहता हूं जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ही होने वाला है। मैं क्यों होने वाला है ये थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ये गिफ्ट सिटी का डेट अनाउंस हुआ है, 3 जून को ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है आपके क्या बोलते हैं अहमदाबाद में, सिंगापुर से। तो ये जो 3 वर्ल्ड में एक्सचेंज है, यूके, यूएस और सिंगापुर, वो अब 3 जून से यहाँ ऑपरेट करेंगे। उसका एडवांटेज क्या है सर? एडवांटेज ये है कि जो छोटे मोटे ट्रेडर्स फॉरेन के थे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं था। अब वो वहाँ गिफ्ट सिटी के थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं उसके थ्रू वो लेके कभी भी आ सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं, और उनको डॉलर अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो उनको कन्वर्शन चार्जेस जो डॉलर टू रुपीज़ एंड रुपीज़ बैक टू डॉलर बचेगा। दूसरा बड़ा एडवांटेज है, उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और वॉटएवर। तो 15% का भी अगर शॉर्ट टर्म मांगे तो वो बेनिफिट है। और तीसरा बड़ा एडवांटेज है जो कि इंडियन ट्रेडर्स को भी नहीं रहेगा, ये आपका एसटीटी, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी, ये सब रिफंड हो जाएंगे उनको। तो इनको 20% का कम से कम बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से 3 जून के बाद में, और अगर हम देखें तो 4 लाख करोड़ का जो 2 साल से सेलिंग है, बाइंग किया है D2s ने, ये उस वक्त बेचना चालू करेंगे और बहुत भयंकर पैसा आएगा। और उस हिसाब से अगर वो पैसा आया तो बहुत तेजी आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट स्टॉक्स एंड सेल इन 2-3 months horizon with a very very decent profit. This is completely my interpretation and I am not giving a recommendation. But हम इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू सर। Who's next? Who's next? अर्णव बोलो ना भाई। सर मेरा सवाल हो गया, आपने उसको डिस्कार्ड भी कर दिया। सर मेरा वो रिएक्शन दीजिए ना। राजा डिस्कार्ड नहीं किया, आप इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा।
हम लोग समझ ही नहीं पा रहे आपका सवाल को। सर मैं फिर से समझा देता हूँ, सिंपल है, मैं इसका आंसर तो फाइंड आउट कर लूंगा। नहीं, लेकिन आप तकलीफ मत करो। वो बहुत मतलब बहुत ऊंचे लेवल का है वो सवाल। सर ऊंचे लेवल का तो नहीं है, जब जेन स्ट्रीट काम कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। कौन काम करते हैं? There is an organization, sir, which is working in Hong Kong, Singapore, US, and they are spreading like virus. Hi, this is Karan here. Can I go with my question or? Yeah. Okay, शरद भाई क्वेश्चन आपके लिए है। तो आज अभी जैसे मैंने देखा कि आज मार्केट ने बहुत ही सडन रैली एकदम दिखाया, स्पेशली 3 PM के बाद, एंड नो लेवल्स वर रिस्पेक्टेड। बेसिकली 17,950, 18,000 कुछ रिस्पेक्ट नहीं हुआ। तो इन माई माइंड दिस इज अ बेयर मार्केट रैली, बट बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है सडनली यूएस मार्केट्स में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी। और जो 3 हफ्ते पहले जो सिचुएशन था वे बैंक्स वर गोइंग बस्ट, एसवीबी का हो गया, क्रेडिट स्विस का हो गया, सडनली ऑल नेगेटिविटी हैज गॉन। तो ये इज दिस अ जेन्युइन रैली अकॉर्डिंग टू यू के यू नो देयर इज मोर टू व्हाट मीट्स द आई? यही मेरा क्वेश्चन था, बिकॉज दिस हैज बीन लाइक वेरी, आई डिडंट सी दिस कमिंग, तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। See, I'll tell you. Nifty consists of 8 stocks. एकदम हैवी वेट, वही मैनिपुलेट करते रहते हैं वो। So actually, I am not a big fan of Nifty. And your question about 3 o'clock more, it is what happens in a illiquid market. And earlier I gave an example of Kester seed market कि 4 से 5 बजे तक होता है, वो 5-7 मिनट बाकी होता है, वो 20 जन वो पता नहीं वो किधर से आते हैं, लाओ 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 करके वो कट भाव देके चले जाते थे। तो ये ऐसा है कुछ। अच्छा, it's totally illiquid. The volume is very less, and open interest today increased by 5 lakhs. It is 87 lakhs. So I don't see, and today being the last day of the month, so NAV propping. Secondly, there was rebalancing. So you would have seen the our FI number is 3,300. The cash So it's flow, all yeah. yeah. So all that put together, But yeah, I think, yeah. yeah. So Sharad bhai, matlab, my point was like, with so much every around negativity around, and suddenly everything vanishing and globally rallying, matlab, I know आपने जो बोला वो it completely makes sense कि वो end of the month था rebalancing, but is it like a proper have we entered bull market के this is still a bear market which is getting corrected for another fall? What is your view on that? See, I would call it a success rally. Okay. And in 2007-8 also, I was short maybe 1,000 crores at that time. Right. And the market used to move like this only, very erratic, very erratic. But you have to hold your nose if your trade is big and you know what's going to happen. So basically, when you say it's a bull market or a bear market, forget all that. Do what you feel is right. You feel if it is overpriced, sell. If you feel it's underpriced, buy. Don't go by all these acronyms and all that.
Thank you, Sharad bhai. And also another thing, if you are bullish or bearish or both at the same time, why don't you play stocks यार? वो निफ्टी में क्यों जाते हो यार? बराबर है. आपको कितना पैसा कमाना है? बोलो, एक स्टॉक बोलता हूँ, आप बोलो. नहीं मतलब टारगेट तो वही होता है कि एटलीस्ट 1% पर मंथ या 2% पर मंथ जैसा टारगेट. 24%, रबिश 25% एनुअली. रबिश 30-40% पर मंथ नहीं हुए तो वो करने का ही क्यों ट्रेड? अच्छा 30-40 नहीं शरद भाई, वैसा टारगेट में नहीं. मैं 2 to 3% इज व्हाट आई विल से. मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ इफ आई गेट दैट फ्रॉम द मार्केट. देखिए, what is the difference between a performer and a non-performer, and an achiever and a non-achiever? Achiever targets 100% return a month, and non-achiever targets 2%. ओके. वो 100% का वो ठीक है, नहीं आता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है. बट ये रखना पड़ेगा दिमाग में. थिंक बिग यार, क्या छोटा छोटा बात करते हैं. थैंक यू फॉर दैट पर्सपेक्टिव. कभी वैसा सोचा नहीं, बट या श्योर, थैंक यू फॉर दैट पर्सपेक्टिव. एक मिनट. गुड इवनिंग सर. नहीं, एक मिनट, इसको बोलने का है मेरे को. देख भाई, तू जो भी है, एक बात बोलता हूँ, लाइफ में बहुत मुकाम आएंगे, बहुत तकलीफें आएगी, बहुत सक्सेस मिलेगा, सब कुछ बहुत होगा. लेकिन अहम बात है कि अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे, आप सर्वेंद्र कहाँ है? who's this fucker? So I request you from now onwards, think big. श्योर शरद भाई. Yes. Sure. Thank you. And always be positive. Absolutely. Yeah. But thank you so much for that. That was really. Yeah. हाँ, बोलिए. शरद भाई गुड इवनिंग. हाँ, एवरीवन गुड इवनिंग. मैं रोहतक से बोल रहा हूँ, अरुण गुप्ता. सर मैंने जो है ना ये टीवीएस मोटर और एशियन पेंट के लोड शॉर्ट है सर मेरे में फ्यूचर. और मैं फर्दर जो है जी ये इंडियन होटल और आईटीसी शॉर्ट करना चाहता हूँ सर. आप करो. इन पर व्यूज बताइए सर. आप क्या लगता है सर आपको? थोड़ा बहुत आपको पैसा लगेगा. पैसा तो सर मैंने खूब लगाया हुआ है मार्केट में. हेलो. मतलब हाँ जी. आप कहना क्या चाहते हो? बहुत लगाया मतलब मैंने अपने 2 करोड़ के करीब इन्वेस्ट कर चुका हूं सर मैं इनमें. कुछ डिफरेंस भी दिया है. थोड़ा सा नीचे का शॉर्ट है मेरा टीवीएस और एशियन पेंट. ज्यादा नॉस नहीं है, मतलब तकरीबन बराबर सा ही हूं मैं. 20-25 रुपए शेयर का डिफरेंस है. और इंडियन होटल और आईटीसी अभी बहुत ज्यादा इनमें मतलब जो है ना मार्केट में भगदड़ सी मच रही है. बहुत बढ़िया. तो मैं इन दोनों को भी शॉर्ट करना चाहता हूँ. भाई साहब. हाँ जी. ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा जी. शॉर्टिंग का एक नियम होता है. जी. शॉर्टिंग का एक नियम होता है. हाँ जी. बढ़ती हुई चीज को बेचने का नहीं. हाँ जी. उसको दूर से नमस्कार करो. जी. और पत्नी गली से निकलो. हाँ जी. शॉर्ट वो करो जो खद्दड़ है. हाँ जी.
उधर बहुत पैसा मिलेगा। जी अगर आप समझते हो कि मैं रुस्तम को मार दूंगा, हाँ जी, तो रुस्तम आपको एक चूरा बना के आप मार 500 देगा। बेच देगा। लेकिन सर मैं बीच में डिस्टर्ब करता हूँ कि एक मार्केट का रूल ये भी है ना, जब मार्केट में किसी शेयर्स के बारे में ये हो जाए कि बहुत बढ़िया, हर आदमी उसमें इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ले लो ले लो ले लो। जैसे अब इंडियन होटल है, बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया, लेकिन ये लेवल। आपको शेयर बाजार में कितना एक्सपीरियंस है? सर मेरे को हो तो गए 5-6 साल। ओके, मुझे 45 साल है। जी सर, जी आपके मेरा कहने का तात्पर्य समझो, जी जो घटता है ना हाँ जी वो बेचो ना, वो घटने वाला है करके क्यों बेचते हो? जी राइट सर। आपको मालूम है घटने वाला है? जी आपको मालूम है आईटीसी का मार्केट कैप कितना है? हाँ, अभी तो निफ्टी मेंटेन कर रखी है सर आईटीसी के द्वारा। मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, उसका वैल्यू कितना है कंपनी का? अब मेरे ख्याल में 3 लाख करोड़ से ऊपर चला गया शायद न, पता नहीं है ना। एग्जैक्ट नहीं मालूम सर। हाँ, तो फिर जब भी शॉर्ट करना हो ना, वो कोई भी चीज, जी तो बराबर मनी कंट्रोल पे सब देख लिया कर। ओके सर। और दोबारा बोलता हूँ, हाँ जी, चढ़ते को सलाम मारो, सलाम मारो, बिल्कुल सर, उतरते को और ठोको सर। जी आप मेरे को व्हाट्सएप लगाओ, 1-2 आइडिया देता हूँ तेरे ओके सर, थैंक यू जी। को। मेरा नंबर है। हाँ जी ठीक है, who's next? ओके सर, थैंक यू जी। थैंक यू। चलिए भाई, बोलिए। शरद जी, अभी ये अर्नब ने सवाल पूछा था ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर को कैसे ट्रैक किया जाए, याद है आपको? अभी पूछा था। तो जब गवर्नमेंट ही जो है ऑपरेटर को ट्रैक नहीं कर सकती, तो हमारा आप क्या करेंगे? लेकिन अर्नब का जो सवाल था वो एचयूएल के रिजल्ट को लेकर के था। एचयूएल के रिजल्ट अच्छे आए थे, तो उसके हिसाब से एचयूएल को ऊपर जाना चाहिए था, उसके बजाय एचयूएल गिर गया, इसलिए वो सवाल पूछने यहाँ पर आया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी काफी सारे रिजल्ट अच्छे आने के बाद में रिलायंस का भी इतना बढ़िया रिजल्ट आया, लेकिन सारे के सारे स्टॉक जो है रिजल्ट आने के बाद में फिसल रहे हैं। अरे इसका वो आपके हिसाब आपके से? हिसाब से अच्छे है ना। हाँ, हाँ, आप रिजल्ट तो पढ़ो भाई। अच्छा। वो पेपर में आया 19,000 है, ये है वो है, हाँ, इतना नफा है, वो तो टैक्स बेनिफिट मिला उसको। ओके। अब देखिए, आप अपने आपे में रहिए, जितना समझता है उतना ही बात करो। अच्छा। ज्यादा सोचे बिना क्या मतलब है? और एक बात बोलता हूँ आपको, बोलिए। रीड एज मच एज यू कैन रीड। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए भाई, कौन है? विन विन विनी जी बोलिए। क्यों आ जाते हो? हाँ बोलिए भाई साहब। गुड इवनिंग शरद सर। गुड इवनिंग। सर अभी जैसे ये बैंक निफ्टी 39,000 से चला हुआ है और अभी तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है, तो ये रैली कहाँ तक जाती दिखती है और कहाँ से ठोकना शुरू कर सकते हैं? कहाँ से ठोकना चालू करना चाहिए? 42,000 से। हेलो। और अगर अभी शॉर्ट कर रखा और फंसे हूँ तो निकल जाना चाहिए कि वेट करने लायक है अभी कि हो गया रैली का बस? अब पुट बेच दो। सर
सर फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ना कि एक तरफ हाँ पुट बेच दिया दूसरी तरफ शॉर्ट कर रखा है। क्या? हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, अभी आ रही है। सर पुट बेचने पे फिर ये लगता है कि पहले शॉर्ट कर रखा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि अगर बढ़ेगा भी तो भी अपना जो शॉर्ट खड़ा है वो तो नुकसान में जाता ही रहेगा। अरे लेकिन आप पुट बेचोगे तो आएगा ना पैसा। ठीक बात है सर ये। हाँ सर बजाज ऑटो क्या मतलब एकदम हमारा बजाज वाली टोन लेके निकलता ही जा रहा है कि रुकेगा ये भी कहीं? आज 7,000 रुपया हो जाएगा। अरे सर ठीक। पूरी दुनिया को वो शॉर्ट है। अच्छा। ये क्यों जाते हो ये सब पता नहीं यार, काय को आपको वो पूरे मार्केट में बकवास कंपनियां दिखती नहीं है कि मजबूत में मजबूत को ही ठोकने का है आपको। वो ये रहता है सर, एक बार फंस गए स्टॉप लॉस पे निकले नहीं, अब लॉस इतना हो जाता है कि लगता है कि फायदे में ही काटेंगे, पर वो रुकने का ही नहीं हो रहा, एवरेज करने का भी चांस नहीं दे रहा। देखो अभी जो करना है। ठीक हाँ है भाई, सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जितेंद्र बोलो। MNS। Good evening, Sharad sir. Am I audible? या Yeah, so I have a two technical questions और एक थोड़ा आपसे मतलब shorting के regarding है, but it's fine if you don't want to answer. So technical, I don't know if Sarvendra sir or anyone can answer. So when we have these any particular ETFs or mutual fund, तो इनका expense ratio रहता है, right? Let's say an ETF has an expense ratio of 1%. तो इसमें इफ आई बाय विद इन तो हाउ डू दे चार्ज दिस एक्सपेंस रेशियो? अगर मैंने लेके उसको एक महीने में ही बेच दिया, सो डू दे चार्ज दैट एक्सपेंस रेशियो एज इन लाइक 1/12 ऑफ 1%? So how do they charge? Or is it built in 1%। the NAV? 1%। 1% irrespective of when I sell, 1% कट जाएगा मेरा? या Okay. And the other question was regarding USD INR. So do you think dollar will rally from here, or will it be is it a short time correction? अभी थोड़ा डॉलर नीचे आ रहा है, तो उसका पूछना था मेरे को। 81.5 on the downside and 83.5 on the upside। वो हाँ पॉइंट सर, ठीक है सर, थैंक यू। और थोड़ा स्टॉक्स का भी था अगर, बट इफ इट्स फाइन इफ यू डोंट वांट टू आंसर, दैट्स आल्सो फाइन। तो मेरा एक दो शॉर्ट स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट किए हैं मैंने, वैसे हेज लगा के ही किए हैं। सो एक तो ये है, सो वन इज दीपक नाइट्राइट एंड द अदर वन इज नवीन फ्लोरिंग। ये दो स्टॉक्स को शॉर्ट किया था मैंने। सो डू यू थिंक आई शुड मेंटेन दीज शॉर्ट्स? और मतलब मेरे को चलेगा अगर लंबा भी है तो, इन केस इट डज नॉट मैटर, तो वो भी चलेगा। थैंक यू सर, ओके बाय। डेविड। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड सर सर मतलब मैं तो बिल्कुल अभी बिगनर हूँ और मतलब मेरी 25 ईयर्स ओल्ड एज है। तो मुझे यही मतलब मैंने जैसे एडवाइस वगैरह ली किसी से, तो मतलब वही म्यूचुअल फंड्स वगैरह बताते, तो मेरे लिए आप क्या बताओगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करनी चाहिए तो, या नहीं करनी चाहिए, अभी म्यूचुअल फंड्स में चलना चाहिए? अगर आपको नॉलेज है वो थोड़ा भी, तो आप स्टॉक पिकिंग करो, वरना म्यूचुअल फंड में चले जाओ। अच्छा,
तो मतलब बेसिकली मैं सोचता हूँ कि जो भी मतलब अभी लार्ज कैप वगैरह जो भी स्टॉक्स होते हैं उन्हीं मतलब ऐसे में कोई मतलब, क्योंकि मेरे को इतनी फाइनेंस बैकग्राउंड से भी नहीं होगी, कोई रीड करने आता है ये इनकी बैलेंस शीट्स वगैरह कुछ भी, तो फिर म्यूचुअल फंड में ही चले जाओ। ठीक है या कि बोलिए ना कि ये जितेंद्र। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सरविंदर सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था। इससे पहले आपने एक बार ट्विटर स्पेस पे बात करी थी कि करेक्शन इज पेंडिंग इन निफ्टी, जब हम लगभग 17,800 700 पे थे, और आपने कहा था कि अगर 18,000 18,100 के ऊपर निकल जाता है मार्केट तो हो सकता है हम एक बुल मार्केट में एंटर कर जाएं या फिर वो करेक्शन पेंडिंग रह जाए। सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस सर? या वेरी गुड इवनिंग। देखिए, नहीं, अच्छा सवाल है आपका। तो जब हमने लास्ट 18,100 के लेवल से बोला था तो वहाँ से 16,800 जाके आया, बट द ओनली थिंग इज कि अगेन दैट करेक्शन till 15,200 remained pending for whatever reason. Market is very very market is showing lot of नीचे से फटाफट घूम रहा है. So now that these levels have been taken and ये 22-23 हफ्ते के बाद एक अच्छा वीकली क्लोज ये बना है, जिसने कुछ पिछले 4-5 हफ्तों के हाई भी निकाल लिए हैं और एक नया स्विंग टॉप बना के आज बंद किया है. और द वेरी फैक्ट कि वो 870 वाले हाई के ऊपर बंद किया, तो कल वीकली कैंडल तो हमारे कल ही बन गए थे, बिकॉज हम तो थर्सडे के कैंडल देखते हैं. सो द थॉट इज यस कि एक बार के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म बाजार रिवर्स हो गया है. टिल नाउ 17,650 डज नॉट ब्रेक. निफ्टी अभी थोड़ा ऊपर ही चलेगा, 15 दिन चले 20 दिन चले वो देखते हैं. बट नेक्स्ट करेक्शंस में आइडली जब तक 17,600 नहीं टूटता, 17,600 17,650 आई थिंक ब्रॉडली अब ये ट्रेंड ऊपर का रहेगा. उसमें टारगेट्स ऊपर में इमीडिएटली जो दिख रहे हैं ओपन अप है वो 18,300 18,400 है, बट इवेंचुअली ये टारगेट्स बढ़ भी सकते हैं और एक छोटा करेक्शन कहीं बीच में से आना है तो 200-400 पॉइंट का आ सकता है. बट द होल आइडिया है कि अब शायद 17,600 17,650 के आसपास उसके नीचे जाए नहीं और पहले एक लेग ऊपर का बाजार करके आएगा. व्हाई आई एम सेइंग दैट, दो तीन चीज़ें हैं उसमें. एक तो इंटरनेशनली द येन कैरी सीम्स टू बी बैक, जैसे आज का स्टेटमेंट आया जापान में से. खाली इसका हम नेक्स्ट वीक फॉलो थ्रू देखेंगे. तो इफ येन इज फॉलो थ्रू, इफ येन कैरी ट्रेड इज बैक इवन फॉर से वही 15-20 डेज 1 मंथ जो भी है, 1 से 3 महीने के लिए अगर येन कैरी ट्रेड वापस आ रहा है एंड येन इज गोइंग बैक टुवर्ड्स 145 148, तो इन दैट केस बाजार को थोड़ा सा रिस्क ऑन का मौका मिल जाएगा और बाजार रैली करेगा. और BSE 500 का ऑलमोस्ट 70% यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड था पिछले हफ्ते तक. तो वही देख रहे हैं आप कि उस स्पेस में बहुत अच्छे बाउंसेस आ रहे हैं. मतलब स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बढ़िया मार्केट है और बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं. तो आई थिंक वी शुड बी फोकसिंग मोर दैट साइड एंड जस्ट कीपिंग आई ऑन द निफ्टी ट्रेंड कि चलो निफ्टी का ट्रेंड सपोर्ट कर रहा है ऊपर में, दैट्स इट. तो आई थिंक लोगों के पैसे बन जाएंगे. और यस 18,300 18,400 तक निफ्टी में जगह बन गई है और मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में बाजार रिवर्स हो गया है. तो अभी ऊपर के टारगेट्स जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम देंगे. बट जैसे कि कल ही व्यू रिवर्स हुआ है, सो विल सी द नेक्स्ट वीक हाउ वी प्ले आउट एंड देन फॉर्म अ लार्जर व्यू एंड सी कि रिस्कॉन वापस आ रहा है, करेंसीज टर्न हो रही है, रिस्कॉन वापस आ रहा है, तो व्हाई नॉट, रिस्कॉन भी आ सकता है 3-6 महीने के लिए. थैंक यू सर. सर एक 2 मिनट और लूंगा सर मैं आपकी. मेरे को एक 2 स्पेसिस पे और सर आपके रिव्यूज चाहिए थे. एक तो सर टू व्हीलर स्पेस पे एंड सेकेंडली थोड़ा सा फेवरेटली सर क्या कहते हैं ये PSU बैंकिंग पे सर. फॉर एग्जांपल जैसे ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और ये सब जितने छोटे बैंक है सर. तो देखिए ओवरऑल मैं इंडेक्स पे बोल देता हूँ. आई थिंक फॉर द PSU इंडेक्स आई ऑलवेज मेंटेन कि भाई उनमें क्वार्टरली के जो करेक्शंस थे मंथली क्वार्टरली में वो पूरे हो गए हैं PSU बैंकिंग स्पेस में. तो अब आपको निफ्टी PSU बैंकिंग में अच्छा एक ट्रैक्शन मिल सकता है. और करेक्शंस जो पहले जो सारे स्टॉक्स चले थे उनके एक बढ़िया 4 महीने का करेक्शन कंप्लीट हो गया. तो अब आई थिंक द ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ रहे हैं. दिस इज जो हम लास्ट कई महीनों से बोल रहे हैं कि PSU बैंक के करेक्शन जब पूरे होंगे तो अब लेग्स ऊपर के यहाँ पे आने वाले हैं. तो आई थिंक PSU बैंक्स का तो डाउट नहीं है. बट ऑटोज में मुझे अभी भी डाउट है. लेट्स सी कि ऑटो इंडेक्स हाउ द निफ्टी ऑटो परफॉर्म्स. बट निफ्टी ऑटो इंडेक्स का लास्ट ही लेग था, उसी में पुल बैक्स चल रहे हैं, उसी में थोड़े बहुत 8-10% 5% कहीं डिपेंडिंग ऑन स्टॉक ऐड हो सकता है. बट बहुत ज़्यादा मुझे 13,100 200 चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा 13,500 13,600 के ऊपर निफ्टी ऑटो लगता नहीं है.
तो आई वुड बी लिटिल जी वेरी सर। ऑन द ऑटो स्पेस. मुझे ऑटो स्पेस में बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा फिलहाल. थैंक यू सर। बट इंडिविजुअली 5-7% स्टॉक्स चल सकते हैं. मतलब बाजार जब चलेगा तो 5-7% मूव करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है. स्टॉक्स के लिए वो आ सकता है. बट आई वुड बी वेरी 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 ऑफ द, बिकॉज लास्ट लेग है, मुझे लास्ट लेग में ट्रैप नहीं होना है ऑटोज में. जी सर, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज्यादा रैली कर चुके हैं. कुछ कुछ स्टॉक्स जो हैं वो तो लाइफ टाइम हाई पे भी पहुंच चुके हैं. आई डोंट फाइंड एनी रीजन टू गेट देम. नहीं, मैं तो खैर रीजंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा. बट मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग भी यू हैव टू जस्ट गो एंड सी व्हाट द इंडेक्स हैज बीन डूइंग राइट फ्रॉम एग्जैक्टली 2022. सर. जब उसने निफ्टी के साथ एक हाई मारा, उसके बाद वो 17-13-600 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है. सो इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट 6-9 मंथ्स की वो उस एरियाज में सेलिंग आती है. तो जब तक 13-600 का क्लियरेंस नहीं आ जाएगा, 13-600 13-700 के ऊपर क्लियर नहीं बंद होलेगा, तब तक जी नए रिवॉर्ड्स मेरे हिसाब से तो इमर्ज नहीं होंगे. मैं लास्ट के 400-500 पॉइंट खेलने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है. बिल्कुल सर, उसमें बल्कि फंसने की समस्या ज्यादा है. ठीक बात है जी. थैंक यू सर. थैंक यू. नेक्स्ट बोलो. के बोलो. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हेलो सर, टाटा मोटर्स डीवीआर में क्या फर्क है, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, कौन सा बेटर है? डीवीआर. ओके सर. ओके, थैंक यू सर. Hi sir, good evening sir. Ashish Tiwari here. My question is related to Fin Nifty. Sorry, मुझे पता है आपको पसंद नहीं है, but should we consider it कि उसमें वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और उसको एज अ मेजर लाइक थर्ड ऑप्शन कंसिडर किया जाना चाहिए? हाँ, बेफिक्र यस यस यू शुड. डालो पैसा डालो, लूज ऑल द मनी और पैसा खो, मजा करो. और कुछ पूछना है भाई को? क्या No sir, thank you. एक बात बताओ भाई, Yes यहाँ sir. पे हर किस्म का सट्टा निकलेगा. बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑटो निफ्टी, ये निफ्टी, वो निफ्टी, सब में खेलोगे क्या? इतना पैसा है क्या? मेरा टच लाइन अगर आप देखोगे तो 12-13 से आइटम ज्यादा है ही नहीं मेरे पास. Don't get entangled in all this crap, yeah. This is just made to part your money from you. Yes sir. Sir, one good book to read for fundamentals or anything other than balance sheet, because I'm not from that background. नहीं यार, बुक तो मैं कितना 15-16 साल हो गया, वो छोड़ दिया, ज्यादा ही हो गया होगा. So anything which can benefit me Yeah. from your experience. Yeah, One Up on Wall Street, Peter Lynch. Okay sir, thank you very much sir. वो Pleasure बुक to है ना, talk to you sir. वो बुक अगर आप पढ़ेगा ना, you will understand how you invest. Sir, once more time, like आप just एक बार फिर से बोल दीजिए, मैं I am writing it down. One Up on Wall Street. Okay sir, thank you. आप बता रहे थे कुछ एक्सपीरियंस बता रहे थे सर कुछ उससे. हाँ, कि उसमें सब कुछ है, how he used to pick companies and all that. Great insight. And you can relate, it's in easy language. Yes sir. Okay, thank you. Yeah. Thank you very much sir. Thank you. आप बोलिए, रॉजर. Hi Sharad sir, how are you? Fine. Sharad sir, basically I wanted to understand since मैं काम करता हूँ, I work for a corporate.
स्पेशली इन मर्जर एंड एक्विजिशंस, और मैं यूएस में काफ़ी डील करता हूँ, एंड आई कैन सी यूएस मार्केट में तो डील्स ही नहीं है इस वक्त, मैंने कि देयर इज नो डील्स हैपनिंग. When I say deals, there is no integration happening, there is no separation happening, it's a kind of a slowdown. But when I see Indian market, US market काफ़ी लास्ट 2 हफ्ते में फॉल भी हो रही थी, बट इंडियन मार्केट को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. कॉन्टिन्यूसली सिंग 16,800 से निफ्टी 18,000 आज आ गई, 18,100 आ गई, या 200 भी हो सकता है हो जाए, 300 भी हो जाए. So is that fundamentally we are, as an Indian economy, we are good, or it's like all it's a game play and suddenly 1-2 महीने बाद या 1 महीने 2 महीने बाद हम इतना बड़ा फॉल देखेंगे कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा वो, मतलब सेंस की जैसे 1-2-3 हज़ार पॉइंट 10 दिन 15 दिन में चले गए, 18 से 15-16 हज़ार आ गए, 17,000 आ गए, दोबारा वापस आ गए वहीं पे. Because in my business, where I am into, I don't have any work as of now in last 1 or 2 months. It is complete slowdown in the US, right? uh, and it's all dependent because of the market forces, slowdown happening. But Indian market का तो मुझे उस हिसाब से कोई sentiment दिख ही नहीं रहा है. I can't read it. I mean, as a fundamental guy, I can't see those things happening in the market. So what's your point of view? See, I'll answer in one sentence. IT company are coming out with results. The stock should have been 30% lower if it was in US. Here it is up by 2%. So all in all, our market is overpriced by 30%. Okay. So this means 30%, which means any certain day it can come and it can fall also in 10-15 दिन के अंदर एकदम से कोई ऐसा आया जहाँ पे ऊपर पे लोग, there will be people hanging at the up, right, or the top, right? तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. Okay. Yeah. Thank you. Yes, Visu's name. Chandra Girish. हाँ सर. सर ये LIC 900 से अभी 550 के आजू बाजू है, इसको मंथली आई एम बाइंग, तो शैल आई कंटिन्यू इट? No. No, you should not buy. Okay, sir. Thank you. Sir, Loris Labs reported a very bad numbers, though there is a buying seen today. So will that buying continue, or can you please give your views? Thank you. Will the buying continue or not? Yes, it will continue for a day maximum. It's horrible. Hello? Hello? Yes, sir, you're audible. You're audible. You're audible. अरे audible. नहीं तो ये 1-2 दिन का ही खेला है बस. Okay. Thank you. Yeah. Piyush, tell me. हेलो सर, हाउ आर यू? Fine, fine. सर मेरा सवाल था कि इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं? ये भी तो मैं बोला कि 30% नीचे होना चाहिए. आपको अच्छा लगता है तो लो. सर जैसे हेलो. लॉन्ग टर्म के लिए मतलब, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. हाँ, आपको जो मन में आवे वो करो ना यार. नहीं सर, मेरे आपकी बोल हम तो आपको बता दिए. ओके सर, ओके सर. यस सर, यस. तो मैं कौन हूँ भला आपको? ओके. बोल. मैं हेलो.
हाँ जी सर। सर कैन आई स्पीक? स्वागत। Hello, sir. हाँ बोलो। Sir, what do you think about the pharma sector, sir? Is it the right time to get inside this or to be away from it, sir? देखो how long it lasts. It's a Okay, fad. sir. Because I have a kind of quite a good amount of investment in Divi's Laboratories in around the average of 3,000 of the shares, sir. So, do you think is it worth holding, sir? Let the results come. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hi, sir. I just want to ask you about LNT. It's exactly 1 year back I added LNT at 1700 levels. Now it's trading at 2300. I would like to add more quantity. What is the right price to enter in between? The price that opens on Monday is the right price. And good shares, no Sure. price, just buy. Okay. Thank you. Raju, भाभी को बोल फोन Hello, sir. Good evening. Sir, I have specific. Hello. Hello, am I audible?